In an endothermic reversible reaction, an increase in temperature will, in endothermic reaction, system absorbs energy from its surrounding in the form of heat. अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीन्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है. दैट इज स्टॉप द रिएक्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर, shift the equilibrium in the reverse direction, equalize the rate of forward and reverse reactions is incorrect. Option C is the correct answer. Next question. The condition that is not required for equilibrium is R/N. Options are closed system, constant temperature, equal amounts of reactants and products, equal rates of both forward and backward reactions. में से जो correct answer है वो है option C, that is equal amounts of reactants and products. Means C is the correct answer. Next question. Which of the given reactions will have the unit of Kc as per mole DMQ? इन रिएक्शंस में से हमें पहचानना है किसका यूनिट ऑफ Kc बराबर है पर मोल DMQ के. As you know, equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation. इस MCQ को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है आप इन सब के Kc कैलकुलेट कर लें और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जिसको मैंने कैलकुलेट करके शो किया हुआ है. दैट इज प्रोडक्ट को मैंने ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट को मैंने नीचे लिख दिया, इनके जो कोफिशिएंट्स थे उनके पावर की फॉर्म में लिख दिया. फिर मैंने क्या किया ब्रैकेट्स में कंसंट्रेशन के यूनिट पुट कर दिए. दैट इज मोल पर DMQ. इसको इससे मैंने कैंसिल आउट कर दिया. 1 मोल पर DMQ लेफ्ट था. DMQ यहाँ पे डिवाइड है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जो -3 है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज DMQ पर मोल. इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ पर मोल DMQ जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एक तरीका और है मतलब पेपर में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करें. वो तरीका ये है कि आप क्या करें पहले तो नंबर ऑफ मोल्स देख लें. यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है. इनका डिफरेंस क्या आया 0. मीन्स इसका कोई यूनिट नहीं होगा. यहाँ रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है तो इनका डिफरेंस +1 है. यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है, डिफरेंस -1 है. यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2, डिफरेंस +1 है. ये क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट है. अगर इसके ऊपर पावर +1 होती तो हमारे पास यही आंसर होता यूनिट का, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं है. अगर मैं इसमें -1 लगा दूँ तो मीन्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो मीन्स ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें -1 गिवन हो डिफरेंस में वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. दैट इज ऑप्शन सी. या तो आप इस टेक्निक से चले जाओ या आप सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो. आपको जो मेथड इजी लगे आप उस तरह इस MCQ को सॉल्व कर सकते हो. What happens when the following two soluble salts are mixed? बेरियम क्लोराइड को जब हम मिक्स करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा बेरियम नाइट्रेट जो कि क्या है सोल्यूबल सॉल्ट है और सिल्वर क्लोराइड जो क्या है इनसोल्यूबल सॉल्ट है. दैट्स वाई ऑप्शन डी 1 soluble salt and 1 insoluble salt are produced is the correct answer. As you know, usually solutions of soluble salts are mixed. During the reaction, exchange of ionic radicals, that is metallic radicals, exchange with acidic radicals takes place to produce two new salts. One of the salts is insoluble and the other is soluble. The insoluble salt precipitates solidify in solution. That's why option D 1 soluble salt and 1 insoluble salt are produced is correct answer. Next question. Consider the given chemical reaction. The given chemical reaction exemplifies हमें नज़र आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस में.
According to Arrhenius concept, base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxide ions. और हमें hydroxide ions नजर आ रहे. That's why option B, Arrhenius concept, is the correct answer. Next question. If the hydroxyl ion concentration of a solution is 1 into 10 raised to the power minus 12, then the nature of the solution would be. हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12. इसलिए मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँगी, पीओएच. पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12. लॉग 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 बराबर होता है माइनस 12 के. माइनस माइनस प्लस मीन्स पीओएच की वैल्यू क्या है 12. पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 के फॉर्मूले में मैंने पुट कर दी पीओएच की वैल्यू. 12 यहाँ प्लस हो रहा है तो इज इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस. 14 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2. पीएच की वैल्यू क्या है 2, जो सिग्निफाई कर रहा है हाईली एसिडिक सॉल्यूशन को. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी, हाईली एसिडिक, इज द करेक्ट आंसर. Alkenes and alkynes are classified as organic compounds. This is because they all, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज they all are hydrocarbons. As you know, hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements. Means A is the correct answer. Option B, they all are saturated molecules, incorrect है. Alkenes saturated है, alkenes और alkynes unsaturated molecules हैं. They all have high melting points, incorrect है. इनका यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. दे हैव हाई रेट ऑफ रिएक्शन, इनकरेक्ट है. इनका रेट ऑफ रिएक्शन हाई नहीं होता है. दैट्स वाई ऑप्शन ए, दे आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस इज बिकॉज दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, इज द करेक्ट आंसर. Nonane is an alkane containing 9 carbon atoms per molecule. The molecular formula of nonane is, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2. एन क्या है 9, क्योंकि हमें गिवन है 9 कार्बन एटम्स. अगर नहीं भी दिए हो तो आपको याद होने चाहिए, और यहाँ पे भी सब जगह 9 ही है. जस्ट पुट n इज इक्वल्स टू 9. 9 टू ज़ा 18 प्लस 2 20. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज C9H20 इज द करेक्ट आंसर. A compound that contains ester functional group is, organic compounds consisting of RCOO R dash functional group are called esters. हमें ऐसे आंसर शॉर्टलिस्ट करने थे जिनमें हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स नजर आ रहे हैं. ऑप्शन बी और ऑप्शन डी. ऑप्शन बी के अंदर हमें एक ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, वो हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन डी में हमें नजर आ रहा है ऑक्सीजन एटम्स कार्बन से अटैच है. दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर. जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को, ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को. हमसे ईस्टर पूछा था, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, name of the given organic compound is, हमें इस कंपाउंड का नेम पहचानना है. सवाल ये पैदा होता है कि हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें या फिर राइट हैंड साइड से. हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, तो हम 1 को प्रेफर करेंगे. दैट्स वाई 1 और 3 शॉर्ट लिस्ट हो जाता. ठीक है. अब चूँकि 2 डबल बॉन्ड से, इसलिए हमें डाई का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1,3 पेंटाडाइन, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. Under normal conditions, alkenes do not react with strong oxidizing agents such as potassium permanganate KMnO4.
This is because of all the following reasons except that alkanes have non-polar bonds, alkanes give substitution reactions, alkanes are saturated hydrocarbons। ये तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से alkanes रिएक्ट नहीं करते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ except they are soluble in polar solvents, means D is the correct answer। As you know, alkenes are non-polar, therefore they are insoluble in water and polar solvents but soluble in organic solvents, means D is the correct answer। C2H5OH, that is ethanol, can be converted into ethene C2H4 by the process of given option reduction, dehydration, न्यूट्रलाइजेशन, पॉलीमराइजेशन में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। Ethene is prepared by heating a mixture of ethanol and excess of concentrated sulfuric acid at 180 degrees centigrade. In first step, ethyl hydrogen sulfate is formed which decomposes on heating to produce ethene, which is collected over water. Means option B, dehydration is the correct answer. Compared to ribonucleic acid, RNA, a molecule of deoxyribonucleic acid is RNA single stranded होता है, DNA is double stranded, means one is incorrect. Self-replicating is correct, DNA is self-replicating। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट, मीन्स 2 और 3 करेक्ट है, इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Maltose is a disaccharide in which two molecules of glucose join together by R/N glycosidic linkage, means C is the correct answer। Maltose is carbohydrate। In carbohydrates, two molecules are joined together by glycosidic linkage, means C is the correct answer। Just for your information, ईस्टर लिंकेज लिपिड्स में पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड्स में, दैट इज आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। हमसे कार्बोहाइड्रेट से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स वाई ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोमिनरल्स आर ऑप्शन से आयरन एंड जिंक, सोडियम एंड आयोडीन, पोटेशियम एंड सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और सोडियम मैक्रो मिनरल्स है, आयरन, जिंक, आयोडीन माइक्रो मिनरल्स है। ऑप्शन ए रिप्रेजेंट करा था दोनों माइक्रो मिनरल्स को, दैट्स वाई ऑप्शन ए आयरन एंड जिंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the hydrogenation of vegetable oils in the presence of nickel as a catalyst at 60 degrees centigrade results in the formation of a compound X having Y bonds. Which of these represents X and Y? X is saturated fats. वेजिटेबल घी क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और उनके सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड्स। दैट्स वाई ऑप्शन ए is the correct answer. That is, X is saturated fats and Y is single bonds, means A is the correct answer. It is advised to switch off gas heaters before going to sleep. This is because the combustion of natural gas in a poorly ventilated room produces given option carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide। में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, means D is the correct answer। As you know, carbon monoxide is highly poisonous gas. Being colorless and odorless, its presence cannot be noticed easily and readily. When inhaled, it binds with the hemoglobin most strongly than oxygen, thus hindering the supply of oxygen in body. Exposure to high concentration of carbon monoxide causes headache and fatigue.
If inhaled for a longer time, it results in breathing difficulties and ultimately death. It is the reason burning is not allowed in closed places. It is advised to switch off coal or gas heaters, cooking range, etc. before going to sleep. That's why option D, carbon monoxide, is the correct answer. Next question. Presence of pollutants in air has an adverse effect on the environment. In order to control air pollution, a country's government should ensure that its citizens avoid the given option: use of private vehicles, plantation of more trees, use of non-combustible sources of energy, setting up of industries away from residential areas में से जो correct answer है वो है option A, that is use of private vehicles. Means A is the correct answer. Next question. When decomposers feed on dead organic matter, they return carbon to air as carbon dioxide. This information shows an interaction between decomposer feed on dead organic matter से हमने पहचाना बायोस्फीयर, रिटर्न कार्बन टू एयर एज कार्बन डाइऑक्साइड से हमने आइडेंटिफाई किया एटमॉस्फेयर, और हमारे दोनों करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, दैट इज बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर. That is biosphere and atmosphere. Permanent hardness in water is due to the presence of fluorides and sulfates of options A, sodium, potassium, aluminium, magnesium. As you know, permanent hardness in water is because of presence of sulfates and chlorides of calcium and magnesium. That's why option D, magnesium, is the correct answer. Means D is the right answer. Next question. When hard water is passed through a column of an ion exchange resin, the resin absorbs options A, sodium ions, calcium ions, chloride ions, sulfate ions. As you know, when water is passed through resin, sodium ions of the resin are exchanged with the unwanted calcium and magnesium ions of the hard water. That's why option B, calcium ions, is the correct answer. Means B is the right answer. Next question. Jaundice is caused due to an increase in the amount of given option A, iron in the blood, red blood cells in the blood, uric acid in the blood, bile pigments in the blood. As you know, jaundice is caused by an excess of bile pigments in the blood. Liver ceases to function and eyes turn yellow. Patient feels weakness and fatigue. That's why option D, bile pigments in the blood, is the correct answer. Jaundice is caused due to an increase in the amount of bile pigments in the blood. Means D is the correct answer. A mineral found in the Earth's crust from which metals are extracted is known as R/N. गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज ओर. मीन्स ए, ओर इज द राइट आंसर. एज यू नो, those minerals from which the metals are extracted commercially at a comparatively low cost with minimum effort are called ores of the metals. Means A, ore, is the correct answer. रिएक्शन की इक्वेशन गिवन है. द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज स्लैश आर, और हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है अमोनिया के साथ अंडर हाई प्रेशर तो यूरिया प्लस वाटर हमें मिलते हैं. मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एज यू नो, carbon dioxide is passed through liquid ammonia under high pressure to form ammonium carbamate. When ammonium carbamate is evaporated with the help of steam, it dehydrates to form urea. That's why correct answer is option D. Means D is the right answer. Next question. During the extraction of copper,
Impurities float in the form of slag over the molten mixture of copper compounds. The slag obtained in this extraction is given option ferrous sulfide, ferrous oxide, आयरन सिलिकेट, कॉपर पाइराइट में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज आयरन सिलिकेट. As you know, copper pyrite is strongly heated in excess of air to convert it into a mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide, while impurities react with oxygen to form volatile oxides. Then ferrous sulfide oxidize to form ferrous oxide, which react with sand to form iron silicate slag. That's why correct answer is option C, that is iron silicate. Means C is the correct answer.